Good morning, students. Welcome to online classes in bio. Students, today we study a next topic in our environment, managing the garbage we produce. हम जो गार्बेज उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या किया जाए, उसका कैसे उसको अपने लाइफ में यूज किया जाए दोबारा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो। क्लियर? तो सम मैनेजिंग सिस्टम है जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल होता है, हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड ए गार्बेज। क्लियर? Every household produces a lot of garbage per day. This garbage includes fruit, vegetables, and some leaves of potted plant, and some are waste paper, and some are unwashed plastic. So a disposal of waste, disposal of waste, disposal of waste means हम कह सकते हैं to get rid of waste, to get rid of waste. Disposal of waste means to get rid of waste. हम waste को हटाएं। तो the disposal of waste should be done in a scientific way. Some of the important method of waste disposal are as follow. First are recycling, and second are prepared या other than preparation of compost, third incineration, and next are landfill, and last are sewage treatment. सीवेज ट्रीटमेंट, जो नालियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट किया है। सो मैनेजिंग द गार्बेज सिस्टम आर फर्स्ट आर कॉल्ड रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग आर द सॉलिड waste material like paper, peels, plastic and metal. Paper, plastic and metals are recycled. Clear? For example, waste paper is sent to the paper mill, where it is
reproceed to form new paper. Clear? More than more. And plastic are broken into some article. Clear? Second are preparation of compost. Some are biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable domestic waste such as left over our food, fruit and vegetable, peels and leaves of potted plants, etc. can be converted into compost. Clear? By the burying in a pit, into ground. हम क्या करते हैं, इनको जमीन के नीचे डाल देते हैं और क्या बन जाता है, कंपोस्ट का फॉर्मेशन बनता है, एक मैन्योर बन जाता है. क्लियर? थर्ड आर इंसिनरेशन. इंसिनरेशन होता क्या है? इंसिनरेशन मीन्स जो होता है वह होता है रिड्यूसिंग टू एश, राख को निकालना. एशेस, राख को निकालना. द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एश, to form ash is called incineration. Clear? And next are called landfill. Landfill, the disposal of waste by putting into low lying area, low lying area and covered with earth, and covered with earth are called landfill. Clear? And next are called sewer treatment. Students, the dirty drain water and feces which is carried from our homes by the underground pipe is called sewage. Students, it untreated sewage is dumped into a river. It can pollute the river, and the river water, thus sewage is disposed of treating it at the sewer treatment. Clear? We will now give an example to describe the use of biodegradable and non-biodegradable material. They can making for different to our environment. Clear? Like that, आपने सुना होगा गांव में, आपने
गांव में लिखा ही है कुल्हड़ का नाम, कुल्हड़ क्या बोलते हैं इसको, कुल्हड़ आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। होता क्या है, इसका यूज होता है, यूज होने के बाद इसको वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता है, लेकिन इस कुल्हड़ का दोबारा यूज हम कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड द सम यूजेज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप हैज फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द प्लास्टिक यूजेज। पेपर कप आर बायोडिग्रेडेबल, है ना, एंड दे कैन डिस्पोज by burning without causing much of pollution. On the other hand, burning of plastic cup produce a toxic substance, a poisonous gas which cause too much air pollution. So they can use in managing the garbage in different system. So this chapter is ended today, and the next day any chapter we start management of natural resources. So now studying, you are studying and come back to next day. Thank you.